Bismillahirrahmanirrahim. So today we are discussing the poetry, the life and works of William Blake. So William Blake was born in 1757 and died in 1827, London. So he was an English poet. Apart from that, he was an engraver, artist, poet, and a visionary author of exquisite lyrics in songs of innocence and songs of experience. So one thing that is quite different about Blake is his profound and difficult prophecies, like some visions that he sees in The Daughters of Albion, the Book of Osrian, Milton, Jerusalem. These poems, and also predominantly his own life, tells that he had prophecies, and some of them were very true. For example, beginning with his life first, then coming to the example. So, whatever he wrote, he had a good assistance of his wife, Catherine, who worked with Blake side by side. And the Lamb, the Tiger, London, Jerusalem, Milton, these are his best lyrics. And these were known as second national anthem in Britain. Like he was so much writing about the people कि इसके इस राइटिंग्स को नेशनल एंथम के तौर पे इसको सराहा गया. सो 21st सेंचुरी में ब्लेक को ये टाइटल दिया गया कि he was the earliest and most original of the romantic poets. So he was posthumously accepted as the original and earliest poet, but as far as his own life is concerned, he was neglected unjustly and dismissed as mad. So अपनी लाइफ में उसे वो सक्सेस नहीं मिली, फेम नहीं मिली, रादर ही वाज लुक्ड डाउन अपॉन, उससे रिजेक्ट किया गया, नेग्लेक्ट किया गया. But afterwards, people came to know about his genius. So he was born in his father's modest hosiery shop, and his parents say James Blake or Catherine Wright Armitage Blake. His father, he came from a humble family across the river in London. और उसकी mother जो थी, she was also coming from not a very good house, like they were not born with the silver spoon. तो माँ की ऑलरेडी शादी हुई थी थॉमस आर्मिटेज से, जो कि मोरेवियन चर्च में इंटरेस्टेड थे दोनों. मोरेवियन जो रिलीजियस मूवमेंट थी उसमें इनका एक इंटरेस्ट था. उसका वहाँ से एक बेटा हुआ थॉमस, हु डाइड अर्लियर. उसके बाद इसका हस्बैंड भी फोर्थ हो गया. उसके बाद खैर शी मैरिड ब्लेक्स फादर. सो जो ब्लेक है, ही वाज वन ऑफ दोज पीपल जो कि modest circumstances में बड़े हुए, यानी they were not rich people like Shelley. I hope rest of you people are listening to me. You can listen to my voice. And Blake was having critical views regarding the school system. So that's what we come to know through his through his quotation that he wrote about schooling, that thank God I was never sent to school to be flogged in following the style of a fool. Because most of the teachings he received at home, or just informal or formal teachings, they came through the mother. घर पे इसने पढ़ा, and he was against the school systems. And since his childhood, he wanted to be an artist. So, अब artist बनने के लिए, his father was always supporting him, and अब एक family जो है जिनका एक small business है, हमेशा parents की ये होती है कि ख्वाहिश के we are like
हैविंग पोस्टेरिटी जो कैरी ऑन करे हमारी इस लाइक व्हाटएवर वी आर डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पे ब्लेक के पेरेंट्स जो के बिजनेसमैन थे, दे वर ऑलवेज ऑफ द व्यू के बेटा इस बिजनेस के अंदर फ्लोरिश करे, लेकिन ही वाज एन आर्टिस्टिक जीनियस, उसके कुछ और माइंडसेट था। सो हिज फादर वाज फ्रेंडली फादर, तो उन्होंने इसको लाइक हेनरी पार्स ड्राइंग स्कूल में जो कि लंदन में था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसको एडमिशन दिलाते हैं और इसको अप्रेंटिस कर देते हैं किसी आर्टिस्ट का जो कि वहाँ पे काम कर रहा हो। लेकिन उसकी जो फी थी उस एरिया की, लंदन के अंदर होगी जगह तो वैल्यू तो होगी, तो डेफिनेटली his parents जो थे like his parents could not withstand, their pocket could not withstand the fee. Afterwards वो एक सक्सेसफुल और फैशनेबल एनग्रेवर विलियम वाइन रॉयलैंड 1772 में उसका इंटरव्यू करने गया। सिंस ब्लेक वाज हिमसेल्फ इंटरेस्टेड इन एनग्रेविंग, तो वो उससे मिलने गया। तो रॉयलैंड की जो फी थी दैट वाज 100, which was much much lesser than the fee from the School of London। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इवन ब्लेक्स के लिए ये भी काफी ज्यादा था। They could afford hardly, but बच्चे ने यानी ब्लेक ने क्या कहा, उसने अपने फादर को ऑब्जेक्शन बताई। फादर, आई डू नॉट लाइक द मैन्स फेस, इट लुक्स एज इफ ही विल लिव टू बी हैंग्ड। और हुआ ये कि 11 years later Ryland was indeed hanged for forgery, और ये टाइबर्न ट्री के साथ आखिरी बंदा वो था जिसको लटकाया गया, यानी उसे फांसी दे दी गई। सो ये ब्लेक की प्रोफेसीज में से एक प्रोफेसी थी जो हमने देखा कि कंप्लीट हुई। सो ब्लेक रोट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। सो ये उसके क्रेडिट में सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। सो ये इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस के सॉन्ग्स ये इसने लिखे आफ्टरवर्ड्स, यानी इनोसेंस एग्जैक्टली जो आया दैट वाज इन 1789, एक्सपीरियंस को ऐड किया गया 1794, द बुक ऑफ टेल इट वाज 1788 to 90, फिर उसके बाद एडिटिंग हुई उसकी, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विजन ऑफ डॉटर्स ऑफ अल्बियन। अपार्ट फ्रॉम दीज ही रोट जेरूशलम मिल्टन, जो कि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स थी जो कि शाया हुई 1789 में when he wrote songs of innocence। तो इसके अंदर the book contained so many important works in that, like the Lamb, बहुत famous poem है, the Chimney Sweeper। so Chimney Sweeper को इसमें इसने लिखा in which he tells the tale of a chimney sweeper। इसके ऊपर एक मेरी सेपरेट वीडियो भी है कि चिमनी स्वीपर है, वो सूट में है, वहाँ पे चिमनी साफ कर रहे हैं, और ये बच्चे वो हैं जिनको बीमारियां ले डूबती हैं क्योंकि अस्थमा के शिकार हो जाते हैं। चिमनी साफ करने के लिए छोटे बच्चों की ज़रूरत होती थी, बड़े नहीं जा सकते थे, चाइल्ड लेबर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो सारी चीज़ें इसमें। तो एंड में जो बच्चा है प्रोटैगनिस्ट, ही सीज अ ड्रीम के खुदा खुश होगा उन लोगों से जो थोड़ी सी जो मेहनत करेंगे और काम करेंगे। सो ही हैप्पीली वेक्स अप एंड वर्क्स। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी अगेन ही टॉक्स अबाउट अ चिमनी स्वीपर, लेकिन ही एड्स हिज एक्सपीरियंस इन दैट कि वो बच्चा जो छोटा पहले ये सोचता था, जब वो बड़ा हुआ है सो ही रियलाइज्ड कि रिलीजन में इतना भी सुकून नहीं है एक तरह से जिस तरह के उसने बचपन में एक ड्रीम देखा। तो वो उसकी मैच्योरिटी उसे मजीद उस करप्ट मुआशरे के अंदर मिसफिट बना देती है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस द शेफर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ हिम, द लिटिल ब्लैक बॉय, द लिटिल बॉय लॉस्ट, द लिटिल बॉय फाउंड। सो ये इसकी songs of innocence। and then coming to songs of experience, जो कि written almost 5 years later, जिसमें he talks about the little girl lost, which was kind of a theme of a girl who was involved in an affair with a boy, and afterwards her parents they came in between and she realized a lesson।
and after the little girl found, it is about a girl who was uh, like misplaced within some desert, and parents, when they went to see, there was a lion who showed them a way that where they can find a girl. The Tiger was very important, written about the French Revolution. London, written about the life of London. A poison tree, you know it very well, but a person develops a poison against a relation, and that keeps increasing. So there's also a video on that too. So altogether, William Blake was famous for his songs of innocence and experience, and apart from that, he is famous for his symbolism. So he uses intricate kind of symbols. So Blake's symbols are very famous because they are much different from the works of the rest of the people. कि इसके symbols जो हैं आम writers के symbols से हटके. So we find that he uses a different net of symbols. He like his famous symbols are children, flowers, and seasons. Like he symbolizes innocence with children, flowers, and seasons. Moreover, when he talks about urban industries, landscapes, machines, so they represent oppression, rationalism, what we find in the poem London, which is, and also in The Chimney Sweeper, which is about life of a person who is spending his whole childhood sweeping the chimneys. So that is also symbolic. So sometimes he has unique symbols. For example, once he says, "Oh Rose, thou art sick," even though hum sabko Rose pasand hai, but he uses such kind of emotions. So tiger is symbol for something ferocious. So his symbols are kind of intricate, but they are interesting at the same time. So this was all about the poetry of William Blake, जिसमें we find कि most important उसका काम जो था songs of innocence and experience, और further उनकी जो poems थी वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई. Blake was not much known in his lifetime, but afterwards he was found with so many titles afterwards when he was dead. So that's all about William Blake.